Hello guys, welcome back to Literary Tutorial by Anisha Mangla. Today we are going to solve few MCQs on William Shakespeare. Along with that, I would be giving an important information related to those MCQs only. So kindly stay connected, watch the video till the end and do subscribe my channel if you like my video. Now the MCQs that I have posted is the 50 important and the uncommon. They are not the common questions. So please do solve all the questions. Okay. So the first question is, which of the following is known as tragedy of time? इनमें से कौन सा tragedy of time बोला जाता है? Hamlet, Macbeth, Troilus and Cressida, Othello. The answer is Troilus and Cressida. अच्छा, इसको तो हम बोलते हैं tragedy of time, but tragedy of reflection अगर question आ जाए, then it is Hamlet. Second is, the phrase undiscovered country is adapted as a novel by Arthur Stringer from Shakespeare's play. From which play this particular novel's name has been derived? Hamlet, Othello, King Lear, or none? The answer is Hamlet from the Act 3, Scene 1. Now this phrase undiscovered country, in this what the Hamlet is trying to say, that after the dying, what is there? Death is a mystery to a mankind, so we don't know what is there in the another country. Next is, the Battle of Philippi appears in the play Othello, Macbeth, Julius Caesar और रोमियो एंड जूलियट. ये जो पर्टिकुलर बैटल हुई है, ये कहाँ पर हुई है, किस प्ले में दिखाई गई है? The answer is Julius Caesar. The Battle of Philippi was fought in 42 BC and it was the final battle between Mark Antony and Octavian. Right? ये हिस्ट्री की एक वॉर है जो इस पे दर्शाई गई है. Next is, the war between Rome and the Volscians take place in the play Macbeth, Hamlet, Tempest, Coriolanus. The answer is Coriolanus. Okay. Next is, from which play is the phrase more sinned against sinning is taken? ये जो phrase है, ये किस प्ले में आया है? Macbeth, Richard II, Midsummer Night Dream, King Lear. Okay. तो ये जो phrase है, ये किंग लियर प्ले के लिए यूज किया जाता है. फॉर किंग लियर के लिए ही यूज किया जाता है. इसमें ये कहा जा रहा है कि जितना उसका गुनाह नहीं था, उससे ज्यादा उसको पनिशमेंट मिली है. राइट. नेक्स्ट इज, हु थॉट ऑफ इडिपस कम्प्लेक्स एज द रीजन फॉर द डिले इन हैमलेट? किसने इसके बारे में बोला? विल्सन नाइट, हॉलमैन हंट, Ernest Jones, Swinburne. The answer is Ernest Jones. Next is, in which play does Act 2, Scene 1 is known as the balcony scene? अब कौन से प्ले में बालकनी सीन आता है? अच्छा, ये बहुत जरूरी है जानने के लिए. आपको बहुत सारे सीन्स हैं जो डिफरेंट प्लेस में दिखाए गए हैं. तो अगर आपको कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसको आप जॉट डाउन कर लो. नहीं तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बताऊंगी कौन कौन से प्ले में कौन कौन से सीन हैं. बहुत सारे सीन हैं शेक्सपियर के प्ले में. तो द ऑप्शंस आर मेजर फॉर मेजर, As You Like It, Julius Caesar, Romeo and Juliet. The answer is Romeo and Juliet. ये जो बालकनी वर्ड है, ये कभी भी प्ले में नहीं आया, ना ही शेक्सपियर को इस बालकनी वर्ड का मतलब पता था. ये उसके बाद जो क्रिटिक थे, उन्होंने इस जो एक्ट है उसका नाम बालकनी सीन रखा है.
Next is, which character of Shakespeare was referred to as full of milk of human kindness? किस कैरेक्टर को full of the milk of human kindness रेफर किया गया है? Hamlet, Othello, Macbeth, King Lear. The answer is Macbeth. Macbeth इनिशियल जब प्ले शुरू होता है तब हमें पता लगता है कि he was a very good पर्सन इंडीड, बस उसका जो एम्बिशंस होते हैं वो इतने ज्यादा होते हैं कि वो उसको बुरा आदमी बनने के लिए मजबूर कर देते हैं. अदरवाइज ही इज अ वेरी गुड पर्सनालिटी. ही वॉज अ पॉजिटिव मैन. नेक्स्ट इज, which play of Shakespeare has been regarded as one of Shakespeare's most assured artistic success by T.S. Eliot? Coriolanus, Hamlet, The Tempest, The Comedy of Error. तो कौन से इनमें से प्ले हैं जिसको आर्टिस्टिक सक्सेस बोला गया है बाय टी.एस. एलियट? आंसर इज कोरोलानियस. अब आपको ये चीज जरूर याद रखनी चाहिए कि टी.एस. एलियट ने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर बोला था, पर कोरोलानियस को आर्टिस्टिक सक्सेस बोला है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Marston's play The Malcontent had something common with the play dash. कौन से प्ले के साथ मार्टन का प्ले जो है The Malcontent has some similarity? Othello, Cymbeline, Measure for Measure, Hamlet. The answer is Measure for Measure. The next is, in The Merchant of Venice, who sang the song Tell Me Where is Fancy Bred? Boccaccio, Jessica, Portia, Antonio. The answer is Bassanio. Next is, which one of the following book did not influence Shakespeare's Troilus and Cressida? कौन सी ऐसी एक बुक है जो इन्फ्लुएंस नहीं किया जिसने ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा को? हेनरिसन्स टेस्टामेंट ऑफ क्रुसेड, लिडगेट्स ट्रॉय बुक, कैक्सटन्स हिस्ट्री, चैपमैन्स 7 बुक ऑफ इलियट. द आंसर इज कैक्सटन हिस्ट्री. तो इससे हमें एक और क्वेश्चन बन जाता है हमारा कि कौन कौन सी बुक्स हैं जिनको शेक्सपियर के ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा ने इन्फ्लुएंस किया. तो कौन कौन सी 3 टेक्स्ट हो जाएंगी? हेनरिसन की, लिडगेट की और चैपमैन की. नेक्स्ट इज, which play of Shakespeare was written at the request of Elizabeth I? The Merry Wife of Windsor, The Taming of Shrew, A Midsummer Night Dream, The Comedy of Error. The answer is The Merry Wives of Windsor. Next is, which play of Shakespeare end with the play of Pyramus and Thisbe? Hamlet, Macbeth, A Midsummer Night Dream, The Comedy of Error. Answer is A Midsummer Night Dream. Next question is, the Battle of Actium take place in Shakespeare's play dash. Othello, Macbeth, King Lear, Antony and Cleopatra. The answer is Antony and Cleopatra. This particular battle of Actium, it took place in 31 BC, and it was a naval battle fought between Octavian and Mark Antony of Egypt. Same, पहले जो हमने बात की थी बैटल ऑफ फिलिपी, वो भी मार्क एंटनी एंड ऑक्टावियन के बीच में हुई थी, और ये जो पर्टिकुलर बैटल है एक्टियम की, ये भी ऑक्टावियन और मार्क एंटनी के बीच में ही हुई थी. दैट वाज इन 42 एंड दिस वन इज
31. That was the Battle of Philippi, was the last battle. Next question is, in which play is cascade episode is mentioned? Hamlet, King Lear, The Tempest, The Merchant of Venice. The answer is The Merchant of Venice. अब ये जो कैस्केड एपिसोड है, इसमें क्या था कि पोर्शिया को मैरी करने के लिए जो सूटर्स थे, दे वर प्रोवाइडेड विद द 3 कैस्केड ऑफ गोल्ड, लेड एंड सिल्वर. They have to choose the right one, and the right one was the lead one. तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि which of the 3 was the correct one, तो lead जो casket था, that was the correct one. So we can have the 2 questions out of it. Next is, which play was sparked off by the gunpowder plot? Othello, Macbeth, King Lear, Hamlet. The answer is Macbeth. Now, the gunpowder plot, ये एक्चुअल में एक इंसिडेंट हुआ था इन 1605, राइट. इसमें क्या था, जो किंग जेम्स हैं उनके खिलाफ इट वाज अ फेल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट अगेंस्ट किंग जेम्स, राइट. और उस एक्ट में जो ये पाउडर प्लॉट हुआ था, और जो हमारा जो मैकबेथ है उसमें कुछ सिमिलैरिटी ऑफ थिंग्स हैं, लाइक ट्रेजन, ओवरथ्रो ऑफ किंग एंड डाउनफॉल ऑफ हिज मर्डरर. Next question is, who described the ideal commonwealth in The Tempest? Ferdinand, Prospero, Miranda, Gonzalo. The answer is Gonzalo. The name the theatre in which Shakespeare had shares. अब ये जो कुछ थिएटर्स हैं उनके नाम हैं जो एलिजाबेथियन टाइम पीरियड में थे, तो यू हैव टू टेल मी कि इनमें से कौन से थिएटर में शेक्सपियर का शेयर था. द ब्लैक फ्रायर, द थिएटर, द यूनिवर्स, द रोज. द आंसर इज द ब्लैक फ्रायर. द कैरेक्टर ऑफ जैक्विस in As You Like It can be best described as whimsical, romantic, melancholic, angry. So Jacques को क्या बुलाया जाता है? Melancholic. Melancholic means sad. Next is, which of the following is a pastoral comedy by William Shakespeare? कि इसमें से कौन सी ऐसी कॉमेडी है जिसको पेस्टोरल कॉमेडी बोला जाता है? Hamlet, Tempest, King Lear, As You Like It. अब ये क्वेश्चन है, कैसे अटेम्प्ट करना है, आपको ये भी एक तरीका बता दूं. अब ये जो आपको दिए गए हैं ऑप्शंस, उनमें से हैमलेट और जो किंग लियर हैं, दे आर द ट्रेजेडीज, दे आर नॉट द कॉमेडीज. तो यू कैन गो फॉर द ऑड मैन आउट. सो यू आर लेफ्ट विद द 2 ऑप्शंस, टेम्पेस्ट एंड एज यू लाइक इट. तो इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर है? द करेक्ट आंसर इज एज यू लाइक इट. Next is, who among the following famously imagined the plight of Shakespeare's sister? George Eliot, Virginia Woolf, Iris Murdoch, Frances Burney. The answer is Virginia Woolf. Who gave happy ending to the King Lear? Virginia Woolf, Nahum Tate, A.W. Pollard, none of them. The answer is Nahum Tate. Okay, one more question. After that, I would be telling you one more thing. Who is the author of the book Shakespeare's with the Pirate? Virginia Woolf, Nahum Tate, A.W. Pollard, or none of them? The answer is A.W. Pollard. So, from these last 3 questions, you can get to know that on Shakespeare also many books were written. So you need to note down all those books name, right? जितने books लिखी हैं उनके आपको नाम पता होना चाहिए, right? Like first is Shakespeare's with the Pirate, then
A Happy Ending to the King Lear. It was again a book written, and there was a plight of Shakespeare's sister. Next is, who has been termed as motiveless malignity? Polonius, Caliban, Shylock और Iago. तो इनमें से किसके लिए ये टर्म यूज किया गया है? This term has been used for Iago, and it has been used by S.T. Coleridge. So आपको एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो पर्टिकुलर टर्म है मोटिवलेस मैलिग्निटी, ये किसने यूज की थी? तो इट वाज यूज्ड बाय S.T. Coleridge. From which play of Shakespeare is the title The Winter of the Discontent, work by John Steinbeck, taken? Richard II, Henry V, Henry VI Part 1, Richard III. The answer is Richard II, Act 1, Scene 1. Next is, something wicked this way come. By Ray is a phrase taken from which of the Shakespeare's play? Hamlet, Othello, King Lear or Macbeth? Now this phrase has been taken from Macbeth, and this particular phrase comes after three witches that has been shown in this particular play finishes brewing their potion. They have made their potion. After that it comes. In which city is A Midsummer Night Dream set in? कौन सी city में है? London, Venice, Rome, Athens. The answer is Athens. Now again, you could be asked about the settings of different plays, so you need to know about that. If you get it from anywhere, you do it. You just note it down from there, or otherwise I would be posting a video on that. Next is, Richard II goes to fight a war in. कहाँ पर जाते हैं? Ireland, Scotland, Wales, Finland. The answer is Ireland. From where is the phrase "give the devil his due" taken? Merry Wives of Windsor, The Tempest, Richard III, Henry V. Henry V is the answer. The novelist dash. Who is the novelist? You have to tell. The novelist dash soliloquies owe much to the Shakespeare's. His character is a classic tragedy hero inspired by King Lear. Herman, John Steinbeck, William Faulkner or Ernest Hemingway? The answer is Herman. Next is, in which folio Ben Jonson called Shakespeare the soul of the age, the applause, delight, the wonder of our stage? किस फोलियो में बेन जॉनसन ने ये बोला था? The answer is first. In first folio. Next question is, who in 1896 coined the term problem plays to describe Shakespeare's 3 plays? Right? अब आपको पता है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि शेक्सपियर ने 3 प्रॉब्लम प्लेस लिखे थे, पर ये जो टर्म है प्रॉब्लम प्लेस, ये किसने यूज किया था? फ्रेडरिक, इलियट, कॉलरिज, ड्राइडन. द आंसर इज फ्रेडरिक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Goethe compare Shakespeare's character to watches with transparent dial, water full of fishes, land full of fairy tale. The answer is watches with transparent dial. Now we have to match the column. अब पेपर में देखते हो तो मैचिंग भी आती है.
So Hamlet, sexual desire. King Lear, ambition and power. Macbeth, aging and general conflict. Othello, search for meaning in life's dilemma. अगर आपने ये जो ट्रेजेडीज हैं इनको पढ़ा हो तो हमने देखा है जो हैमलेट है वो बोलता है टू बी और नॉट टू बी, राइट? तो ही इज सर्चिंग फॉर मीनिंग इन लाइफ्स dilemma. King Lear, right? He asked his daughters that who loved the most. क्यों? क्योंकि वो एज हो रहा था और उसने अपनी जो सारी पावर्स और जितना भी उसका था वो सारा अपनी किसी बेस्ट डॉटर को देना था. सो द आंसर इज एजिंग एंड जनरल कन्फ्लिक्ट. नेक्स्ट, मैकबेथ. मैंने आपको पहले भी बताया कि इनिशियल में जो मैकबेथ होता है ही इज अ मैन ऑफ फुल ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, बट उसका लेटर ऑन उसका जो कैरेक्टराइजेशन है वो बदल जाता है. वाई? बिकॉज ही इज अ मैन ऑफ एम्बिशन एंड वांट पावर, राइट? ओथेलो, अब यहाँ पर ओथेलो में सेक्सुअल जेलसी क्यों है? बिकॉज ऑफ Desdemona, because he thinks that Desdemona is having an affair with someone. What is the subtitle of Othello? The Officer of Venice, The Merchant of Venice, The Moor of Venice, The Son of Venice. The answer is Moor of Venice. Cymbeline is set in dash. Mythical Britain, Venice, Athens, mythical Rome. The answer is mythical Britain. Who calls Hamlet tragedy of moral idealism? Coleridge, Bradley, Eliot, Hazlitt. The answer is Bradley. Bradley calls that Hamlet is the tragedy of moral idealism. Next, name two warring families in Verona in Romeo and Juliet. Montague and Capulet, Capulet and Tybalt, Lawrence and Montague, or none. The two families in Romeo and Juliet are Montague and Capulet. Name the two friends in the Two Gentlemen of Verona. Who are the two friends? Valentine and Proteus, Proteus and Claudius, Claudius and Valentine, or none? The answer is first, Valentine and Proteus. Which is the bloodiest play of Shakespeare? कौन सा ऐसा प्ले है जिसको bloodiest play बोला गया है? Julius Caesar, Macbeth, Antony and Cleopatra, or Titus Andronicus? The answer is Titus Andronicus. क्यों? क्योंकि इसमें we can see the characters are burned alive, arms are cut off, parents stab their children to death, there is an incident of rape, one life burial, one case of cannibalism and many more. इसलिए बहुत कुछ बैड दिखाया गया है, evil दिखाया गया है, इसलिए इसको bloodiest play कहा गया है. Name the two farces play by Shakespeare. कौन से दो farce हैं? The Merry Wives of Windsor and Twelfth Night, The Taming of Shrew and Twelfth Night, Taming of Shrew and the Merry Wife of Windsor, or none of above? The answer is Taming Wife of Shrew and the Merry of Windsor, which is the third option. Who said about Midsummer Night Dream, I saw Midsummer Night Dream, which I had never seen before, nor shall ever again? Means उसको वो despise कर रहा है. Arnold, Coleridge, Pepys, or Johnson? It is said by Samuel Pepys. He is a diarist
और जब उसने देखा तो he has a negative view about it. Next question is, who has written tales from Shakespeare? John Clare, Charles Lamb, Coleridge, Samuel Johnson. The answer is Charles Lamb. Next is, who has written the critical book Character of Shakespeare's Play? ये क्रिटिकल बुक किसने लिखी है जहां पर उन्होंने कैरेक्टर के बारे में देखा है? एडिसन, कॉलरिज, इलियट और आर्नल्ड? Arnold is the right answer. Next question is, among of the female characters of his play, who is also known as Grouch by her name? किस फीमेल कैरेक्टर के लिए ग्राउच नाम यूज किया गया है? कैल्पुरिना, वाइलो, लेडी मैकबेथ और नन? The answer is Lady Macbeth. ये जो ग्राउच थी, she was a historical character और she was born around 1005. और जैसा मैकबेथ में दिखाया गया है, ये माना जाता है कि उस टाइम पे भी सेम इंसिडेंट हुए थे, इसलिए लेडी मैकबेथ को ग्राउच के साथ कंपेयर किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु एडमायर्ड Pericles as ultra dramatic? Coleridge, Wordsworth, Matthew Arnold, T.S. Eliot? The answer is T.S. Eliot. Next is, what is the name of dog in the Two Gentlemen of Verona? Tom, Lizzie, Crape or none? The answer is Crape. Who attacked Othello as the moral shore of this fable is very instructive? Goethe, Thomas Rymer, Addison, Pope? The answer is Thomas Rymer. So here I am done with the 50 questions, very important questions, and I think you liked my video. If you liked my video, do subscribe my channel, and you can join me on Telegram and Facebook if you want. Study hard, all the best, break the leg. There is nothing like shortcut, so study hard. Thank you.